प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम स्वाहा ओम त्र्यंबकं यामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिन्दं मृत्युर्मुक्षामृतां 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 स्वाहा ओम स्वाहा स्थिना इंद्रो वृद्धसभा
धर्म जी, ये कैमरे का फोकस कोचर साहब कह रहे हैं बाहर की तरफ करो। पूछ लो कैमरा। हाँ, एनुअल कोचर को दिखा दो कि कैमरा कहाँ कर रहे हैं। कैमरा थोड़ा बाहर कर दो, कोचर साहब को बता दो। हाँ जी।
साइड पे है। यहाँ तो सामने है तो क्या nobody comes here, it's okay. ठीक है भाई? हाँ. Cyril, please come this side. Don't block the view. May I request? Please come this side. Actually, we're going to start. आगे आगे आता हूँ. फोटो आपकी इधर से आ रही है. और मास्क पहन लो. चेकिंग होगी. Please ensure your masks are on. Otherwise, you'll be caught in the camera. चलो. Action. Please start. Good morning, Honorable Vice Chancellor Ma'am, esteemed guests, colleagues, and dear students. I, Dr. Shweta Tiwari, extend a warm welcome to all of you to Sangathan 2021, the 22nd Inter-Amity Institution Sports Meet in celebration of Founders Day. It is indeed a proud moment for all of us as we have gathered here to celebrate the spirit of camaraderie and sportsmanship. I now request Honorable Vice Chancellor Ma'am, Professor Dr. Balwinder Shukla, to say a few words of encouragement to us. Honorable Founder Professor, Honorable Chancellor, Honorable Chancellor, Vice Chancellor, all the deans, campus press, all faculty members, viewers. Great day today at Amity University campuses that we are once again celebrating the Sangathan, the celebration of Founders Day. Founders Day celebration, especially as Sangathan last year due to COVID pandemic. See that both the Sangathan 20 and 21 are celebrating together. So that means we are the double spirit. We are going to celebrate our Sangathan. Again, a new initiative where the Sangathan being celebrated in a hybrid mode. That some of us are physically present on the campus, that thousands of students, faculty members, campus hands, and all are currently watching live and being part of the Sangathan celebration. And every year we start the Sangathan with the Mashal relay, various campuses, when the Mashal is lit in all the campuses simultaneously. And this day is for the vision of Honorable Founder President, and which was implemented by our Group Vice
Chancellor at that time was the center head of Sangathan. Engage the students creatively for their holistic development. So I would request our Vice Chancellor also to say 2 words before we let the Sangathan Bashar. Vice Chancellor, Dr. Shukla. It was a dream of our very respected founder, Dr. Ashok Chauhan, to always give a platform to our students that they should be able not only to understand that how they can come together, but celebrate the spirit of coming together as unity family. I still remember when Dr. Atul Chauhan started this event and told all of us that year after year for many centuries, the entire Amity family will come together and in one spirit, as one family, will celebrate Sangathan. Not only to celebrate the birthday and the foundation day of Amity family, but to pay our tributes to our very respected founder. Today, since morning, we are receiving number of phone calls from our alumni. We are getting number of messages on social media. So on behalf of our founder, on behalf of our chancellor, on behalf of our all trustees, we once again congratulate each one of you that the spirit which was started 23 years back, you are taking it forward. And we are looking at, in the morning, I was looking at Dr. Goswami, who was one of the core committee members and today also is sitting and was taking it forward. And we were missing Groverji, who was one of the core members. And I'm sure that from heaven, he is sending his good wishes and blessings to each one of us. I also remember our Chancellor AUR to kickstart athletic meet, which we started up as a first Sangathan, and then taking forward the legacy. Abhayji, who's our very innovative trustee playing basketball matches, and all others, chairperson blessing us on every occasion, and all members of Chauhan family, and as well as all students from years. It's 23rd time we are celebrating it. All sports captains coming together, and thousands of students taking back wonderful memories. On behalf of Amity family, on behalf of everyone at Amity, we once again welcome you to 23rd Sangathan, which we are celebrating. To not only pay our respects to our great leader, our founder president, but to play and come together as Amity family. Thank you so very much. Your words were truly a delight, and sir, you have filled us with energy and enthusiasm. Fire has always been pivotal to the existence of mankind. It is a symbol of energy, spontaneity, and life. The tradition of torch relay originated in Greek mythology as a way to celebrate life. The passing of fire from Prometheus to death. The torch is not just a vessel carrying fire. It is the light of spirit, unity, and hope. All of you to clap louder for the amazing. Indeed, a magnanimous sight. Before the Mashal tour begins, I would like to call Cyril Thomas as a representative of all the students and participants to share his energy. It's been 23 years, and I feel really blessed that I am here with the flame. We are going to be there onto every floor of the Amity. With every step that we are taking, we are bringing the power of togetherness. We are bringing the power of unity. As Sangathan, we all Amity and stand here to make us all united and make this a big success. And now I am here. I feel very much blessed here to stand in front of you all. I can see many people around here, but yeah, it's a big blessing for me. And as Sangathan has been proceeded ahead, every game which is being conducted, it brings a spirit, it brings a unity, it brings a togetherness, it brings a hell lot of
wide range of values for us. And with this, when I please respond to me when I say Sangathan Kipe Pure. Later, when we. Okay, thanks. Thank you, sir. अच्छा कोई बात नहीं Make some noise. It is truly difficult to divert one's attention from the faith. Still, I request 3 rounds of cheers for Sangathan 2021. बहुत इम्पोर्टेंट है और अपने स्कूल को इनकरेज करो कि कैंपस आए Hello. Hello. Is it fine or? So you'll be speaking.
थोड़े थोड़े चेंजेस करने मैम, वो मैं कर लूंगी. Good afternoon, esteemed guests, colleagues, and dear students. It is my proud privilege to announce the arrival of our Honorable Chancellor, Sir, Dr. Atul Chauhan. Sir is being accompanied by respected Vice Chancellor, Ma'am, Professor Dr. Balwinder Shukla, and other venerated dignitaries. It is a matter of pride for all of us to have Sir among us today. Flag is a symbol of belief, vision, and core strength. It shows that we as an educational community share the same ideas and goals. We stand for the same spirit. I now request Honorable Chancellor Sir to hoist the Sangathan flag. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the flag. कुछ ऐड कर लूंगी यहाँ पे भी. हाँ. दो लाइंस मैंने लिखी मैम स्टार्टिंग में, और ऐड करूं? Okay. Now our beloved Chancellor Sir is handing over the Sangathan Mashal to the sports captain of Amity School of Business, who were joint third position holder in 2019. The run with the Sangathan Mashal in sports ground has commenced. The Sangathan Mashal is now handed to sports captain of Amity Institute of Biotechnology, who were third position holders in 2019.
कैसे भी अपडेट होगा वो कर दो आगे जल्दी आ जाओ ये जो वाला ये का भी ध्यान रख ओ
Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. इसको है ना मूव कराना हमें चाहता है मूव मीन्स ऑनलाइन पर्सन जितने हमारे पार्टिसिपेंट है ना जब तक यहाँ कोई मेजर एक्टिविटी नहीं थी तो हमारा कैंप
एक ओम शन्नो देवी उषयापो भगवते संगसंतना स्वाहा ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्पर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति निष्पक्षो वर्षणेभिः स्वस्ति नो वृषभजातु स्वाहा ओम भद्रं कर्णेभिः सूर्याम देवो भद्रं पश्येम सवित्रः स्वाहा ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्पर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति निष्पक्षो वर्षणेभिः स्वस्ति नो वृषभजातु स्वाहा ओम शन्नो देवी उषयापो भगवते संगसंतना ओम पापक ओम प्रणप्रण स्वाहा स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम मन्त्रमोक्षवर्धनम स्वाहा ये पूरा दिन चलता है हमारा या अभी चलेगा 45 1:45 हेलो हेलो लोग से आपको कुछ पढ़ नहीं रहा है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम स्वाहा ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वाहा बात तो कोई नहीं आता और सुनाओ जी कैसे हैं आप सवाल में पड़ते देखो यार नहीं जा रहा
मुझे का टाइम हाँ कौन से हाँ क्या और सुनाओ छोड़ दो मैं ना कर दो हिसाब से कहती बात कर रहा हूँ हिसाब से कहती मैं ना फेड़ कह देते हैं ना फेड़ दूँ क्यों मावा चल रहा हो ठीक है मावा चल रहा हो ठीक है कौन सा वाले वाइफ है जो प्योर पेड़ है ऊपर और का बैठ ऐसे करके तो भाई मैंने ज्यादा ना मैं 2 महीने किया मेरी यूनिवर्सिटी खुल जाए चाहता हूँ मैं कहूँ ऐसे ऐसे कलर पड़ता है तो क्या सब बदल मैं तो बंटी तुम खा मैं 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 गारंटी ले रहा हूँ गायत्री मंदिर आपको बस गायत्री में ओनली गायत्री में मैं तो आ जाओ सब पढ़ने लगूँ अब बजाय समझ में आएगी बहुत हीरा और सुनाओ बैठे एक घंटा हो बैठे 1 घंटा बैठे आज कोई आ रहा होगा कैमरा लगे हुए हैं साथ में यार और अच्छे सुनाते आपको फिर स्टार्टिंग में तो बाल सही चलते हैं अगर बाल नहीं करते हैं आराम बैठ
Very good. Yeah. Kecil agak cepat tadi. Very good. Baik. Thank you. Thank you. Thank you. आप जानवर पे ले भाई
Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो, खोल दो सपनों को उड़ने दो. Hello, check one, check. Down. Hello, hello, check one, check करिए. Hello, ये ले लो, उसको रहने दो. Hello, सर आ रही है आपकी? जाना एक मिनट. नहीं ठीक है. Hello, ये बोल. Hello, राजीव Done. हेलो, भूमि सर आ रही है? ठीक. हेलो, हेलो, वॉइस टेस्टिंग. हेलो, हेलो, ठीक है.
स्वाद आसमानों का चखने दो, साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरें हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े, आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है, साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है, साथ है तो नाम है, संगठन उड़ान है। स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं मृत्युर्मुक्षीयमृतं स्वाहा। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो, खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो, साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरें हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े, आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है, साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है, साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet.
खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है
जीत कुछ खास है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े, आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है, साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है, साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो, खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो, साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े, आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है, साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है, साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो, खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो, साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है, संगठन से पहचान है, संगठन
मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरें हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरें हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरें हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो
Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet.
खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है
कुछ खास है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है, साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है, साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। पता नहीं है इनके पार्टी Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो, खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो, साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है, साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है, साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो, खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो, साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है।
मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरें हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरें हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरें हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो
Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरें हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरें हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet.
खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है
जीत कुछ खास है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है, साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है, साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो, खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो, साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है, साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है, साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो, खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो, साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है, संगठन से पहचान है, संगठन
मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरें हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरें हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरें हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो
Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल
दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरें हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरें हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है
बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है, संगठन से पहचान है,
है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो
संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है।
Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरें हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरें हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet.
खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है
जीत कुछ खास है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है, साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है, साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो, खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो, साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है, साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है, साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो, खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो, साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है, संगठन से पहचान है, संगठन
मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो
Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities Hello, and check one. institutions around the Check. world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से Hello, check one. Check. Hello, check one. Check. Hello, check one. Check. दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। Hello, check one. Check. Check. साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल
दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है
बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है, संगठन से पहचान है,
संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरें हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है।
Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरें हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरें हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet.
खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरें हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरें हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो,
स्वाद आसमानों का चखने दो, साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरें हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है, साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरें हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है, साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन
से पहचान है, संगठन से उड़ान है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है, साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है, साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरे हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है, साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है, साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है, संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है।
हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरें हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। दूर है मंजिल तो क्या, हजार है मुश्किल तो क्या, चीर के लहरें हम बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है, संगठन से उड़ान है। साथ है तो नाम है, संगठन से उड़ान है। Every year, to celebrate Founders Day, tens of thousands of students from Amity universities and institutions around the world congregate at Sangathan, the Amity Sports Meet. खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। खोल दो सपनों को उड़ने दो, स्वाद आसमानों का चखने दो। साथ है तो बात है, हर जीत कुछ खास है। संगठन से पहचान है, से उड़ान है। संगठन से पहचान है, संगठन से उड़ान है। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः बड़े मैदान में डट के हम खड़े। आगे रहने का जुनून है, हौसला देने का सुकून है। साथ है तो आसान है,
संगठन। हेलो हेलो सुनो, हेलो हेलो, आ रही है यहाँ पे, हेलो। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ। ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते रसिसं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जोमस्तन्नो अस्तु भयं श्याम पतयोरयीणाम्। ओम स नो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन् धैर्ययन्ता। ओम अग्ने नय शुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जोराण्यमेनो भूष्टां तेन मौक्तिं विधेम। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वद्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नाधमन्नाध्याया दधे। जी शुरू तो हो गया, शुरू हो गया रोज वाला हो गया है स्टार्ट। हाँ अभी तो रोज भी हो रहा है पिछले। हाँ ओम उद्बुद्धश्वाग्ने प्रतिजाग्रहे त्वमिष्ठा पूर्ते संसृजे थामयं च अस्मिन् सधस्ते अत्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदता। ओम
ॐ अयं तैद्मात्मान् जातवेदसेनेधस्ववर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेत्से धन्नवा ॐ समिधाग्निन्दुवशतघृतैर्बोधयथा तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतना ॐ सुषमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे धन्नोमा ॐ तन्त्वा सविहिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहक्षोषाय विष्टया स्वाहा इदमग्ने अङ्गिरसे धन्नोमा ॐ अयं तैद्मात्मा जातवेदसेनेधस्ववर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेत्से धन्नोमा ॐ अयं तैद्मात्मा जातवेदसे नेधस्ववर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधया हाँ स्वाहा मोहित भाई इदमग्नये जातवेत्से अकाउंट धन्नोमा देखिएगा। ॐ हेलो अयं ये संगठन वेन्यू। तैद्मात्मा हेलो जातवेदसे क्लियर है। नेधस्ववर्धस्व चेद्धवर्ध हेलो चास्मान् हेलो प्रजया पशुभिर्ब्रह्म हेलो वर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा हेलो हेलो माइक इदमग्नये टेस्टिंग। जातवेत्से हेलो धन्नोमा हेलो हेलो ॐ अयं तैद्मात्मा जातवेदसे नेधस्ववर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेत्से धन्नोमा जी ॐ अयं तैद्मात्मा जातवेदसे नेधस्ववर्धस्व चेद्धवर्धया अस्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधया यहाँ तक आ गया ना। हाँ जी पकड़ाता हूँ। राजीव वो स्टैंड दे दो फिर।
ओम ज्योतिः सूर्या सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सजो देवेन सविता ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय धन्नो मा ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय धन्नो मा ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानभ्यानेभ्यः स्वाहा इदं गणिवायवादितेभ्यः प्राणापानेभ्यः धन्नो मा ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्मा भूर्भुवः स्वरो स्वाहा ओम यां मेधां देवगणा पितरस्य उपासते तया मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ स्वाहा ओम अग्ने नय शुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जोहोराणमेनो भूयिष्ठां तेन उक्तिं विधेम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृता स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृता स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृता स्वाहा ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृता कस्य सिद्धनं स्वाहा
ॐ स्तुतामया वरदः वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमाने ध्वजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा ब्रह्मलोकं स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये धन्नवा। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय धन्नवा। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये धन्नवा। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय धन्नवा। ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये धन्नवा। ओम भूर्वायवे स्वाहा इदम वायवे धन्नवा। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदम आदित्याय धन्नवा। ओम भूर्भुवः स्वरग्नि वायवायतेभ्यः स्वाहा इदम अग्नि वायवायतेभ्यः धन्नवा। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निश्चक्षुष्कृत विद्यात् सर्वं सृष्टं सुहतं करोतु मे। अग्नये सृष्टिकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां शमध्यत्रे सर्वान्नः कामानां समर्थय स्वाहा इदमग्नये सृष्टिकृते दन्नमः। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये धन्नोमा। ओम भूर्भुवः स्वः अग्न आयुंसि पवसा सुवोर्जमिषं च नः आरेवादशदुक्षुणां स्वाहा इदमग्ने पवमानाय धन्नोमा। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निरिषि पवमानः पाञ्चजन्या पुरोहितः तमीमयि महाभयं स्वाहा इदमग्ने पवमानाय धन्नोमा। ओम भूर्भुवः स्वाहा अग्ने पवस्वपास्मि वर्चासु वीर्यं दद्रैमयि पोषं स्वाहा इदमग्ने पवमानाय धन्नोमा। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन त्वदेता निन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु भयं स्याम पतयोरयिनां स्वाहा इदं प्रजापतये धन्नोमा। ओम त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो हवयासि शिष्ठा यजिष्ठो वहिन्तमासो शुचानो विश्वा द्वेषांसि प्रमुग्धे स्मत् स्वाहा इदमग्नि वृणाभ्याम् इदन्नोमा। ओम इमं मे वरुणश्रुधि हवमद्या च मृडया त्वामैश्वरा च के स्वाहा इदं वरुणाय धन्नोमा। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा बन्धमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेय बोधिरुषं समान आयुः प्रमोषि स्वाहा इदं वरुणाय धन्नोमा। ओम एते शतं वर्णये सहस्रं यज्ञा पाशा वितता महान्ता ते विर्णो अद्य सवितोत विश्वे मुञ्चन्तु मर्ता स्वर्गा स्वाहा इदं वर्णाय शवित्रे विष्णवे विश्वे वेदेभ्यः मध्वः स्वर्गेभ्यः धन्नोमा। ओम अयाश्चाग्ने अस्य न विशस्ति पाश सत्त्वमित्तु मयासि अयानो यज्ञं भासयानो देहि भेषजं स्वाहा इदमग्ने ऐसे धन्नोमा नीचे रहने दो। ओम उदत्तमं वरुणं पाशमश्मदवादवं मध्यमं श्रद्धाया तथा वयमादित्यकृते तवानागशो अदितये श्यामा स्वाहा इदं वर्णाय आदित्याय आदित्याय च धन्नोमा। ओम भवतं न समनसौ सचेतसा वरे पशौ मा यज्ञं हिं शिष्टं मा यजपतिं जात वेदसौ शिवो भवतमद्यना स्वाहा इदं जात वेदोभ्याम् इदन्नोमा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम अग्निमिडे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजं होतारं रत्नधातमं स्वाहा ओम सनः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये स्वाहा ओम स्वस्ति नो मिमेतामश्विना भगा स्वस्ति देव्यदितिर्नर्मणा स्वस्ति पूषा अशुरो दधातुना स्वस्ति द्यावा पृथ्वी सुचेतुना स्वाहा ओम स्वस्ति वायुमुप्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति स्वस्ति आदित्यासु भवन्तु न स्वाहा ओम विश्वे देवानो अद्य स्वस्ति वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्ति देवा अवन्ति बृहवा स्वस्ति स्वस्तिनो रुद्रा पात्वमशा स्वाहा ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इंद्राश्चाग्नि स्वस्ति नो अदते कृधे स्वाहा ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमशा विवा पुनर्दता घृता जानता संगमे महे स्वाहा ओम ये देवानां यज्ञानां मनो यत्रा अमृतार्तज्ञा तेनो राशन्ता मृगाय मध्य यूयं पात स्वस्ति विशदाना स्वाहा ओम एभ्यो माता मधुमत पिन्वते पया पीयूषम ज्योतिरतिब्रहा उक्त सुष्मान रसभरान स्वप्न सस्ताम आदित्याम अनुमदा स्वस्तये स्वाहा ओम चक्षुषो निमिषन्तो अरिणा वृद्धदेवा सुमृतत्वमानसु ज्योतिरथा अहिमाया अनागशो दिवो वर्षमाणं वसते स्वस्तये स्वाहा ओम सम्राज्यो ये शुभ्रधो यजमायुर्परिहृता दधिरे दिविक्षयम् ताविवास नमशा सुवृत्ति विर्महो आदित्याम आदित्यं स्वस्तये स्वाहा बोले इधर बैठो सामान दूं क्या आपका पंडित जी सामान दूं घी भी दूं ठीक ओम विश्वानदेव सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ स्वाहा ओम अग्नेन शुपथाराये अस्मान् विश्वानि देवयनानि विद्वान् योधस्मज्जुहुराणमेनो भविष्टां तेन महक्तिं विधेम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य Sports धीमहि captains of धियो यो नः AIB, प्रचोदयात् स्वाहा ASB, last year's third place holder, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य SF, धीमहि धियो यो नः ALSN. प्रचोदयात् स्वाहा Please report near the podium. Yes, ma'am. Sports captains for the Mashal relay, ALSN, AIB, Asset, ASB, please report near the podium. स्वाहा Please- भर्गो Yes. देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ALSN, ओम त्र्यंबकं ALSN, यजामहे please सुगंधिं report here. Sports पुष्टिवर्धनम् captains, ALSN, उर्वारुकमिव please report बन्धनात् here. मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् check 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 चलना Anybody from ALSN and ASB? Any faculty coordinator from ALSN and ASB to report near the podium, please?
स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम सर्वं वै पुनात्वं स्वाहा ओम सर्वं वै Esteemed पुनात्वं guests, स्वाहा colleagues, and dear students, it is my proud privilege to announce the arrival of our Honorable Chancellor, Sir Dr. Atul Chauhan. Sir has been accompanied by respected Vice Chancellor, Ma'am, Professor Dr. Balvinder Shukla, Dr. Gurinder Singh, Group Pro Vice Chancellor, Amity Educational Group, and other venerated dignitaries. It is a matter of immense pride and joy for all of us to have Sir among us. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome our beloved Chancellor, Sir, along with his accomplished team. We come from diverse cultural groups and linguistic backgrounds, but a flag binds us together as a community that shares same ideas and goals.
A flag is a symbol of belief, vision, and co-strength. The Sangathan flag stands for collective consciousness. It is a source of encouragement for each and every Amitian. Now, I humbly request Honorable Chancellor Sir to hoist the Sangathan flag. Let us behold this majestic sight and express our joy through a thundering round of applause. Thank you so much, sir. Our beloved Chancellor Sir is now requested to hand over the Sangathan Mashal to the sports captain of Amity School of Business, Mr. Param Chaudhary and Ms. Aishna Sagar. They were third joint position holder in the previous Sangathan. The run with the Sangathan Mashal in sports ground has commenced. The entire atmosphere should be charged with energy and passion as we see them running towards the first exchange point. The blazing Sangathan Mashal will now be handed to the sports captain of Amity Institute of Biotechnology, Mr. Shriyansh Bhartiya and Mr. Vitsara Sar. I request everyone to give them a thundering round of applause. Keep the energy and vigor alive. At the second exchange point, they have now passed the torch to the sports captain of Amity Law School, Noida. Also, the runners-up in 2019, Mr. Manan Gupta and Ms. Ishita Datta. I request everyone to keep them motivated by clapping and cheering. Reaching the winners of last year. The students should not stop cheering and clapping for the winners. The Sangathan Mashal has finally reached the hands of the sports captain of the School of Engineering and Technology. The much-awaited moment is finally here. It is now time to light the Sangathan flame, Khel Jyoti. The torch indeed is not a vessel that carries the flame. It is the light of spirit, unity, and hope.
They're taking the mashal and going to light the Sangathan flame. May we have a huge round of applause for them. The Jyoti is lit. Look at the trails of fire leaping towards the sky. May the bright Sangathan flame dispel darkness and promote optimism. Every year, the birthday of our Honorable Founder President, Sir, Dr. Ashok K. Chauhan, is celebrated through a month-long sports meet, which culminates with the felicitation of the winners of various sports events. There could be no better day for the inaugural ceremony than today, as it marks the beginning of Navratra. Color, activity, vibrance is pervading every corner of this ground. Our Honorable Chancellor, Sir, is meeting every participant, and it is indeed a very joyous sight. It is nearly impossible to divert one's attention from the blazing Sangathan flame. May I hear a round of applause for the flame? There should be cheering and applauding. Ladies and gentlemen, let's keep the excitement of this event alive. Put your hands together and let's hear everyone clap.
Fire is an agent of purity and righteousness. Mythology bears testimony to the use of fire as a test of resilience and also success. We can see a live example of the same in front of our eyes. We thank you for your gesture, sir. I now humbly request Honorable Chancellor, sir, to declare the 22nd Inter-Amity Institution Sports Meet, Sangathan 2021 open. I hereby declare Sangathan 2021 open. So boys and girls, 3 cheers for Sangathan. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Thank you. Pigeons are believed to have a strong spiritual connect with the universe. They're true symbols of peace and tranquility. As they flap their wings in the sky, they give a message of freedom and independence. Balloons too are unleashed in the sky as a prayer to God and paint the limitless sky with multiple colors. I request Honorable Chancellor, sir, to release the pigeons and the balloons. Ladies and gentlemen, please put your hands together to express your joy. The ceremonial release of pigeons and balloons has made the entire ambience so serene and mesmerizing. The ground seems to be painted in different hues of happiness and vigor. Our Honorable Chancellor, sir, has hoisted the Sangathan flag and declared the meet open. Very soon, he'll be joining us here. Every year, Sangathan is celebrated with great excitement, and we're looking for a same spirit, camaraderie, and sportsmanship.
I now request our Honorable Chancellor, sir, esteemed dignitaries, accompanying officials and students to proceed towards Edu Auditorium. Good evening, ladies and gentlemen. I welcome you all once again on the inaugural ceremony of our auspicious Sangathan. Our President RBF and Chancellor Dr. Atul Chauhan sir and distinguished guests have arrived. I request all of you to please welcome them with huge round of applause. I'll wait. Yes. Students, you can take your seat. When the oath ceremony will take place, at that you can rise from your seat and take it there. Please be seated. Okay, good. I think now C6 also here. There's some very major negotiation happening. Even I was supposed to be there, but yeah, so I think even C8 and Abhay and all, they should not even say anything, just skip it. Hello, we are online. If somebody has joined the Sangathan online, you can leave this auditorium, please. Or you can switch off your mobile phone also.
A very warm good afternoon to our Honorable and beloved Chancellor Atul Chauhan, sir. Respected Professor Dr. Balvinder Shukla, ma'am, Vice Chancellor, MIT University, Uttar Pradesh. Professor Dr. Gurinder Singh, Group Vice Chancellor, MIT Education Group. Esteemed guests, colleagues, and dear students, a very warm welcome to all of you. Ya Devi Sarva Bhuteshu Shakti Rupena Sanstha. Namastasai, 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 Namo Namah. May the 9 avatars of Ma Durga bless us with 9 qualities: power, happiness, humanity, peace, knowledge, devotion, name, fame, and health. What a better day it could be to inaugurate the grand event of Sangathan, as we are celebrating the auspicious Navratri from today, where we are worshipping the goddess of protection, strength, and wisdom in her 9 forms. We are extremely delighted to have you all in this inaugural ceremony of Sangathan 2021, which is the 22nd Inter-MIT Institution Sport Meet in celebration of Founders Day. A bright and progressive India can only be created when the foundation of young people is based on strong values like dedication, commitment, and integrity. Participating in sports teaches us the importance of team spirit, leadership, and discipline. If the body is fit, the mind is it. Keeping this in mind, every year we celebrate Sangathan, which is an event that inculcates the value of leadership and sportsmanship in students. The annual sports meet incepted way back in 1999 on the Founders Day that is celebrated to honor the dynamic leadership and unparalleled achievements of the founder president of the MIT Group of Institutions, Dr. Ashok K. Chauhan, sir. The inaugural ceremony today commenced with the lighting of the Sangathan Mashal by our respected Chancellor, Dr. Atul Chauhan, sir, Professor Dr. Balvinder Shukla, Vice Chancellor, MIT University, Uttar Pradesh, and in the presence of directors, HOIs, and senior officials of MIT fraternity. The Mashal was carried to various campuses of MIT from Sector 125 by the students of various institutions. This meet is a very important part of students' life at MIT University and helps students to pursue their interest and extracurricular, particularly sports. This event plays a very important role in the overall growth of an individual, apart from only academics. This is indeed the perfect melange of sports, and it brings new energy in the hearts and minds of the children. I welcome you all again in the inaugural ceremony of Sangathan 2021, which is the 22nd Inter-MIT Institution Sport Meet in celebration of Founders Day. खेल समझते हैं मानव शक्ति और बुद्धि का अर्थ, तभी तो प्रतिभागी बड़े से बड़े लक्ष्यों को पाने में होते हैं समर्थ। खेलने कूदने का लो संकल्प, स्वस्थ रहने का यही विकल्प। Now I request sports captain Mr. Aryan and Ms. Kritika to administer the oath on behalf of all the participants. And I request all the students to please rise from your seat to take the oath. Yes, ma'am. Yes. All the sports captain come in front, please. Please stand there only. Students, you can stand there where your seat is and take the oath from there. Please repeat the oath after me. In the name of all the competitors, I promise that we shall take part in the Sangathan 2021, respecting and abiding by the rules which govern them, committing ourselves to the sport without doping and without drugs, in the true spirit of sportsmanship, for the glory of sport and the honor of our teams. Thank you, Mr. Aryan and Ms. Kritika.
Oath taking definitely encourage fidelity to the extent that continues to believe that one just cannot escape ultimate accountability of a breach of faith. I once again heartily welcome our guests for the prestigious moment when our university is celebrating inaugural ceremony of Sangathan, the birthday of our honorable founder, President Sir. Education is about far more than what happens within the four walls of the classroom. And we are very fortunate to have such teachers, such trainers and instructors who recognizes this. Professor Kalpana Sharma is one whose determination and strong will has made us proud on the ground and who taught us that sports is an integral as well as necessary part of our lives. Ma'am is a physical education professional having more than 2 decades of experience in teaching, training, organization and research. So many Sangathan has been organized under the leadership and guidance of her. So let us please call upon with a huge round of applause, Professor Kalpana Sharma, Chairperson, Organizing Committee, Sangathan 2021, to provide us all with her opening remarks on Sangathan 2021. Thank you, Priyanka. A very good afternoon to all present here. Indeed, this is a day which I think for so many days, I'm just saying days, we all were waiting for. And for especially the core team and especially the team of ASPIS and especially the team of Sangathan, which includes each one of us, we were waiting for. So I thank you, Honorable President Sir, Dr. Atul Chauhan, to giving us this opportunity back to organize Sangathan once again. Honorable, respected and path-breaking Founder President Sir, your finished vision and ability to inspire and spreads enthusiasm amongst all. It is difficult to put in words what is his insight, what is his wisdom, what is his attitude and mentorship towards this sport, which is Sangathan. I just want to add one line here before going further. Today morning, actually, I first time learned today how this Sangathan was conceptualized. I'm so much, I should say, thankful to Founder President once again that a small idea of a student is today such a big idea. One side. On the other side, it is the dream which our Chancellor, Dr. Atul Sir, has given us that this Sangathan should last decades and decades and decades. So today we should thank our Chancellor Sir also to give us this opportunity again and again to organize Sangathan in honor of our Founder President. Thank you so once again. We welcome our dynamic, kinetic, enthusiastic Chancellor AUP and President RBEF, Dr. Atul Chauhan, an amazing guide, a supporter who is a great source of inspiration and encouragement, our chief guest for the inaugural function. I also welcome wholeheartedly all the members of the Chauhan family who have joined us today in this function remotely or online. I also welcome all the members of the trustees who are also with us today online. Our mentor, our guide, our Vice Chancellor, Dr. AUP, Professor Dr. Balwinder Shukla. I welcome our group Vice Chancellor, Dr. Gurinder Singh, and the story of Sangathan started there. Then we go forward in welcoming each one of us, our trustees, our deans, our advisors, our heads of institutions, all the dignitaries here, the faculty members here, and all the students who are here with us. Maybe our captains, some other students are here, but all the students who have joined us
online and are witnessing this great day of the inaugural of Sangathan. It is my honor and pleasure as Chairperson Organizing Committee of Sangathan 2021, along with Co-Chairman Professor Marshall Sahani, the Organizing Committee 2021, to welcome each one for Sangathan 2021 opening ceremony. The connect of respected Chancellor Sir has inspired us all. He has closely followed each Sangathan year on year with daily update of all what is happening on Sangathan. And this is a matter of pride as well as an encouragement to us as the members of the organizing committee, and especially our students who don't miss to see our website amity.edu/Sangathan for all the updates they get there. Thank you, students, for that also. This pandemic has been an eye-opener for most of us by showing us the true importance of fitness and health in one's life. The pandemic did delay our Sangathan, but nonetheless, it could not take away our spirit. And that is the Amity Sangathan spirit. We are now back in organizing the most awaited event, the biggest sports extravaganza, the Sangathan, in which thousands of students, faculty members, and staff participate. This year, the Mashal was lit today morning by our Honorable Vice Chancellor Ma'am, and simultaneously it was lit across all Amity campuses. Let me share with you all that this year, being a pandemic year, we have taken care of and we have reduced the number of events to only 8 events instead of holding 21 events earlier. In both the categories for boys and girls, the games will be cricket, table tennis, chess, carom, softball, shooting for boys and girls. For the faculty and staff also, we will be having these events apart from cricket and softball. And of course, the brainchild of our Honorable Vice Chancellor Ma'am, the vintage games will also happen this year. So we look forward for everyone to join, enjoy, and be happy on participating, especially our students, faculty, and staff. With the kind guidance and inspiration of our Chancellor, AUP, and President, RBF, Dr. Atul Chauhan, during this period of lockdown and social distancing, Amity University, Noida campus was with students, will be with students, and will always be with students. And our connect, we did not miss even one day. That is what our Chancellor is. Thank you, Chancellor Sir, for that. The Sangathan website I just mentioned, please visit that website. It will have all your updates. It will have all your matches scheduled there, your results, especially for students, because we have been receiving a lot of emails. Even my WhatsApp is completely full with students' queries that I want to participate in this, I want to participate in this. So for all you students, the Sangathan website is amity.edu/Amazon. Visit it and you will have all the details of your teams, your opponent teams, your matches, and everything. With this, I once again welcome each one of you for the Sangathan 2021. Let us nurture the spirit of friendship, harmony, and leadership among all Amitians. Thank you all. Thank you very much. Thank you so much, ma'am, for introducing us to Sangathan 2021. Sports and games plays a very vital role in our life. It is said that education is incomplete without sports. With this now, I would like to invite Professor Dr. Gurinder Singh Sir, who is a Group Vice Chancellor, Amity Universities, Director General, Amity Group of Institution, and Vice Chairman and Director General, Amity International Business School, to address. Having extensive experience of more than 26 years. So, please. Thank you so very much. I think it's a very important day for all of us as we are assembling
to celebrate Sangathan, to pay our respect to our very own beloved, respected founder president, sir, who not only conceptualized, but then directed our Honorable Chancellor to institutionalize this entire event. And if we are doing it today, it is because of the great vision which our founder had. So give a huge applause to your founder president for organizing it. Great visionary leaders, they always do different things. And this is what in the morning, I requested Dr. Kalpana Sharma, who is now organizing as a chairperson of the Sangathan, to accompany us to Greater Noida campus. And we had about 15 minutes. And she was saying that, give me the story of Sangathan, that how it started, which I would like to narrate to each one of you, to you youngsters who are sitting here. It was year 1999. Your great visionary founder president, he was taking a round, and he had a habit that whenever he was in the campus, he was taking round. He used to go to one class, from one class to another class. So he went to one class where the students who had to go to University of West England in Bristol, they had to go. So he was chatting with them. And he asked one student, and his name was Amrinder Dhillo, I remember. And he asked Dhillo, what you enjoy the most at Amity? And where you want us to improve? And he, as great visionary, he always asks people that how you can improve. And Dhillo said that I want to represent my country one day in Asian Games, but I find that there are very less sports facilities. And he immediately said that we will be organizing a sports event where thousands and thousands of students will participate, and that is how the Sangathan was born. I remember 2000, while I was going and moving towards my home, was driving, Honorable Chancellor Dr. Atul Chauhan, he directed that we should be able to now fulfill the dream of our founder by doing and organizing Sangathan. And that is how we started up with athletic meet. And then day and night Sangathan used to happen. And today, when I was talking to the students, I saw the same passion in each one of our students. I spoke to Naveen, if he's there. If Naveen is there, can stand. Yeah, Naveen. Naveen, I don't know that whether Dhillo was able to win the medal, but we feel so proud that when 3 days back you came and you said that you have won the gold medal for India and has been named as a captain of Indian skating hockey team. Keep on doing great things. And that is what was the vision of our founder. And today, when Kritika and Aryan, you were taking an oath, I could see the kind of passion which was flowing in each one of you. The vision of the foundation, the vision of our founder, the vision of our chancellor, the vision of our very own respected Vice Chancellor, Dr. Balwinder Shukla, a friend of mine from last 23 years. And vision of Dr. Banda Upadhyaya, Marshal Sahni, and of course, Dr. Kalpana Sharma, who's chair, and all deans, directors, head of institutions, vice chancellors of 15 universities, and our director generals, presidents, deans who are sitting abroad. I think the vision of everyone is to fulfill the aim of our founder, who always wanted to understand that why is it so that India, which has a population of about 1.3 billion people, is not able to come amongst the top 5 teams of the world. At MIT, this is the passion that we want our students, that they should come among the top people. And that is why we are organizing Sangathan in respect of our founder, to ensure that we not only come as a family, but we are able to nurture talent. And if you look at the punchline of MIT, we say that we nurture talent. So give a huge applause once again to founder and to all the vice chancellors. I also remember the great contribution of our trustees. In the very first Sangathan, I saw Dr. Asim Chauhan personally participating in shot put competition. I can see Mr. Abhay Chauhan on the screen, and he's smiling, because I do remember, Mr. Abhay Chauhan, the way you played your basketball match, and I'm sure that our chancellor must be remembering the pointer which he did, last minute pointer. By the way, the Shekhar Tyagi who played against you, he is today a CEO of KPMG. And when in the morning I was getting emails from each one of them, everyone was saying that the
most wonderful thing which they remember at Amity is the kind of experience Amity has been able to give. I can see Chairperson of Amity Humanity Foundation, Mrs. Pooja Chauhan. Thank you so very much for joining and inspiring us. And young children who are along with you watching us live, and the entire Chauhan family, and all alumni who are watching in thousands of numbers and have sent us the emails on behalf of Amity family, on behalf of our founder, on behalf of our chancellor, on behalf of our vice chancellor, on behalf of each one of you, I once again, I welcome you for Sangathan, which I would say is a revolution, which is a movement. I will stop here with only request that please ensure that you not only become success stories, but also bring glory to your country. And today when I was looking and I checked with Dr. Kalpana Sharma and Dr. Goswami that how many of our students, they have played well and have become a part of the Indian team. Then besides our student Naveen Kapoor, there's a story of Ranjan Sodhi who played in Asian Games and won Asian gold medal. Pooja, who rose to an international swimmer. Rajiv Saraswat, who became one of the leading shooters. Shekhar Tyagi, who played, if you remember, basketball match. Manisha Sahib Singh Verma, daughter of Chief Minister, late Chief Minister Sahib Singh Verma, who has not only played at a national level, but is a very successful entrepreneur. And of course, Amarjeet Singh Dhillon, with whom our respected founder interacted for the first time. I will stop here with the words that whatever you dream, always obey the rules of the game. And those who have sacrificed their lives, and I can see tens and hundreds of alumni, our faculty members who have contributed for this event and for the growth of Amity, that please keep on doing good work. And this Urdu couplet says, Faisla jo bhi ho manzoor hona chahiye. Whenever you play a game, play in the spirit of game. Faisla jo bhi ho manzoor hona chahiye. Jang ho ya ishq ho, bharpoor hona chahiye. Whatever you do, whether it's academics, or it's sports, right? You should do it full. Faisla jo bhi ho manzoor hona chahiye, jang ho ya ishq ho, bharpoor hona chahiye. Kat chuki hai umr sari jinki patthar todte, ab to unke haath mein kohinoor hona chahiye. I am 100% sure that all of you will bring back the Kohinoor, and there will be a day when India will be standing in the medal tally as #1 country, and we can say to our founder president that the things which you visualize, we have been able to fulfill them. Thank you so very much. It was a pleasure speaking to you. Thank you, sir. You've been an inspiration to us to do well and succeed in life, and it was an honor to hear your words. Here at Amity University, we believe in building a community with responsible and outstanding individuals who bring tremendous change to their surroundings, irrespective of the situation. With that enthusiasm, I would like to invite an outstanding administrator, a brilliant academician, a vivid researcher, and a far-sighted visionary, Professor Dr. Balvinder Shukla ma'am, Vice Chancellor, Amity University, who is popularly known for her multifaceted insight, humility, and leadership. Ma'am. Most respected Honorable Chancellor, sir, our Group Vice Chancellor, all the colleagues on dais and audience, but most important, our students from the various institutions, and also very esteemed members of RBF who are online, as well as Dr. Lamurthy, trustees, and all other members of Amity family. It's a truly a great day today that we are back celebrating the Sangathan with the start of the Sangathan with the inauguration today. Our Group Vice Chancellor has taken us back to the memory lanes, that how this Sangathan was conceived by our Honorable Founder President and the journey thereafter
under the great leadership of our Honorable Chancellor. Honorable Founder President have always envisioned, and when he started the higher education, he always believed and envisioned that the education will be different for the holistic development of students. One side where they are meeting the professional requirement, means the profession fit and competent, developing all the skills and competence, but at the same time it's extremely important to have the physical fitness. That's how the idea of Sangathan came, because the physical fitness is too important. And during the COVID pandemic, we all have realized the importance of physical fitness. The emotional fitness is also very important. That's how the founder president have started. The emotional fitness comes from the value system. And that's how the founder president conceived the idea of human values, celebration of human values. And from that Human Values Day to Human Values Week to the Human Values Quarter. And there also, because that gives the emotional strength, because the emotional strength with the physical fitness and the professional competence makes a person holistic and can win any situation, because Honorable Founder President's vision is that Amitian will change the world. And truly the Amitians are changing the world in every field, whichever they have gone to, whether it's a professional world, the industry, whether they did starting their own venture or going in the higher education or any field. So the Honorable Founder President's vision, which is being implemented under the dynamic leaderships of our chancellors, Dr. Atul Chauhan ji and Dr. Sim Chauhan ji. And it's only that we as a team are able to work. Recently, we celebrated the Innovation Day, because the founder's vision is that we will produce the great scientists, and one day the Nobel laureates will be from Amity, and Dr. Silva Moti ji under the leadership of our chancellors day and night is working on that. How do we produce from the Amity education group the Nobel laureates? Dr. Singh has already just now given that how many sports persons have represented the country, and that what we want to see, the more Amitians bring the laurels in the sports field. And same way that how the Amitians in all other fields can bring the laurels to not only to their alma mater, but the laurels to their country, because this is the happening time for higher education. And I think that the way the Amity education group, not only Amity University of Uttar Pradesh, but the whole Amity education group has moved and set the benchmark for the higher education. The credit goes to our Honorable Chancellor, that he invested in the technologies when the Amity University was just established. And that ease came to all of us, that we are today that in the hybrid mode, we are having the inaugural function of Sangathan, where our colleagues from across the globe, the students from across the globe, the alumni, all are attending it. And I was witnessing the morning, the Mashar relay, and then the inauguration of Sangathan, and will be also the validity function on 25th of October. So the commitment which all the students, all of you are sitting here, you are in the great institution, what commitment you need to display. You have to display the commitment of honesty, because in the sports, it teaches the discipline, it teaches the punctuality, it teaches the presence of mind, because you need to respond very quickly in the sports. How can you have your thinking and the response very, very fast? And when you play the sports, you become very, very strong, not only physically, but equally emotionally. So during this Sangathan, though the number of competitions have reduced, so the numbers of the participating team will naturally have reduced. But we will bring out many events, the quizzes, so many that every single student is able to
participate in this to sharpen their mind and the skills in the sports. Because there are less sports players, but there's more sports lovers. So all those sports lovers, how they can master their knowledge in the sports fields, in all events. And my request to Master Sani and to Kalpana Sharma ji that please plan as many quizzes as possible so that whole amity is engaged in that. So we are very, very fortunate that our Chancellor is very, very busy, but for his love and his passion for Sangathan and his far-sightedness that the Sangathan is for whole life of Amity Education Group. And he's with us. And we are very thankful to Honorable Chancellor for your presence and your motivation and the way you have interacted with the students that I'm sure is inspiring all the students and all the faculty members. We could organize this inaugural session in the auditorium, maintaining the social distancing, but large number of students and the faculty, everybody is online, and I'm sure that they all are waiting to listen to you for your inspiration words, and we should surely motivate them to contribute bigger way to the Amity Education Group and take Amity Education Group as per your dream among the top universities probably. So thank you very much. Thank you very much, ma'am. We are always charmed by a sharp fluency, and your encouragement means a lot to us. As we all know, that the inaugural ceremony today commenced with the lighting of Sangathan Mashal by Balvinder Shukla, Vice Chancellor, Amity University, Uttar Pradesh, and in the presence of directors, HOI, and senior officials of Amity fraternity. The Mashal was carried to various campuses of Amity from Sector 125 by the students of various institutions. So the Mashal was lit all across Amity campuses. We are happy to show you the glimpses of it through a small clip here. I request Dr. Sodhi sir to please show the clip to us.
बाद में बात करते हैं।
Slowly. Two each. Yeah. Nice. We, the students of Amity University, Haryana, Wish you a long life and happy birthday. The clip was mesmerizing and indeed very motivating for us. It has shown us this true spirit of sportsmanship and leadership. So huge round of applause for Amity University. I consider it now a great honor to welcome our respectable Chancellor, Sir, Dr. Atul Chauhan, Sir. Sir is the President of the not-for-profit Amity Education and Research Group and the Chancellor of Amity University, Uttar Pradesh. His vision is to create centers of thoughts leadership across the world, where faculty, scientists, and students can explore and expand the frontiers of knowledge. Thank you, sir. Very good evening to everyone. What an absolute pleasure to be with all of you for the inauguration of the 23rd Sangathan 2021. After the oath was taken by all our sports captains, some of you from within let out a cheer of joy. Today is a joyous day, so let me hear the Amity energy, all the students. Huge shout of joy from all of you, the way you were doing after. Yes, yes, you can clap, yes. Very good. You know, I always say that our Amity students have more energy than any other young people that we know. And Sangathan is to celebrate the energy of all youngsters of Amity institutions all around the world. But before I say a few words, I am seeing that, I'm so happy that Pooja ji has joined us from Dubai. Pooja ji, may I request you to quickly just say a few words to our young students here, the sports captains and all our senior people in the auditorium today. Absolutely. Thank you, Chancellor. Can you hear us? Yes, thank you. Thank you, Chancellor. And I want to reiterate what Dr. Shukla said. So first, I want to thank our respected Chancellor. I want to compliment him because for many years, when nobody even spoke about technology, he dreamt of a highly technically abled university. And I remember the time there was a Wi-Fi system, and now we have such hybrid mode. So Chancellor, thank you so much. We are all connected here today because of the thought process that you had many years back. And Dr. Shukla, I want to congratulate you for an excellent inaugural function. I wish you all the very best. And as this day is dedicated to our founder, who's absolutely a brilliant person and unparalleled visionary, we've all seen that.
But one thing I want to say, Chancellor, that our founder and you yourself, Chancellor, they always talk about Amity family. And past few months have been on a personal, some non-personal note, difficult times for most of us on campus. And truly the spirit of Amity family has stood. And today being able to inaugurate Sangathan has once again reiterated that as Amity, we stand for happiness, positivity, a Sangathat feeling, jise bolte united feeling. And all of us are behind our founder, our chancellor, for the mission that you have. And I wish you all the very best. Thank you so much. Very good. Thank you, Poojaji. I can see Aryavir next to you. Aryavir, just say happy Sangathan to everyone. See? Happy Sangathan to everyone. All right, great. We are all That with you here. children are really missing, Chancellor. They're really missing, letting the pigeons and the balloons. So he is very. I hope we can do that soon. Yes, no, but I'm very happy that Dr. Shukla and everyone, you organized exactly as in the past years with the pigeons, with the balloons. Great. But next year we'll all do it together. I'm also very happy that Mr. Abhay Chauhan is online. Abhay, just 1 or 2 lines from you, please. Thank you, Chancellor. As our founder truly believes that Amitians should be global citizens, well-rounded citizens, not just of India, but of the whole world. So I think that is why more than 2 decades ago, he had this vision of founding and starting Sangathan, which is now embodied through Chancellor and through the organizing committee. And I just want to wish all the students all the best. I'm sure it's going to be a lot of competition, but a lot of fun. And this is what you will remember and what you will learn from many years down the line. All the best. Thank you. Thank you, Abhay. And Dr. Murthy, just because you are online and we can all see you, 1 sentence to represent everyone, all our senior people from Amity, 1 sentence from your side, a blessing to the youngsters and to the sports captains who are in the auditorium. Thank you, sir. Always play to win and participate. Give your best. If you win the medal, one day you will win the medal, but always with full mind, heart and soul, whatever you do, and you put everything together, you will win. 8 years in Amity, I have seen the exponential growth, and I'm sure the Amity will grow exponentially under the blessings of Honorable Founder President and the Chancellor, Dr. Atul Chauhan, a dynamic, charismatic leader, and the whole trustees who give their life to Amity. They are not just running an educational institution. They are running a life for you to generate the future global citizens. So this is the message I want to give. Honorable Founder President, you are an avatar. You have created this Amity universe with a mission to create a happy world. And we are all here to participate in your mission to transform and create a new happy world through our students and faculties. So this is what is the mission. We reassure you, Founder President, on this 20th Sangathan, that we will all work with full enthusiasm, zeal, commitment, devotion to realize your vision of making India #1 in education through Amity. Thank you so much, Chancellor, and congratulations to all the participants in Sangathan 2021. Play to win. Thank you. Thank you, Dr. Murthy. And as you rightly said, the blessings of our Honorable Founder President are always with all of us. Today, he has conveyed his blessings and best wishes to everyone for Sangathan, for the inauguration of Sangathan. And we are looking forward to welcoming our Honorable Founder President to the valedictory function on 25th of October. But Dr. Shukla, let me first of all thank you for your determination to organize Sangathan as much as possible on campus in person. You know, you are absolutely adamant that we will not do it online. We will call our students. It takes a lot of courage. Thank you for that. And I could see the passion in Dr. Gurinder Singh when he spoke, the history that came out. And he just reminded me, I still remember so many years ago when the swimming competitions used to happen at Talkatora Stadium. And you said in one of the days,
I told Dr. Singh, within 2 years, we will not have to go outside. We will build our own swimming pool on campus. And within 2 years, we built the biggest swimming pool any university has in Delhi NCR on campus for our students. But why that moment is even more emotional. And I was just telling Dr. Shukla, it's amazing how time flies, how with so many of you who are in this room today, the leaders and pillars of Amity, we have grown up as professionals, we have grown up as individuals. I still have in my bedroom in a very special place a photograph of holding Dr. Gurinder Singh's son, Arman. And I think he was not even 1 year old. And how many? 3 months old. And this year we are so proud that Arman has flown to University of Toronto to do his further education. So how it flies, time flies with family. We have seen everyone's children grow up. We have seen, Dr. Singh, you were talking about alumni. We have seen young students, and so many of you have educated them, how successful they are in life. And I think that was always the dream of our founder, Dr. Chauhan, to really create this great family of Amity that will transform the lives of so many people, touch the hearts, and give a mission to people to achieve something. And Sangathan really is a culmination of that. Sangathan is many, many things. As Pooja ji said, it is the coming together of Amity. But I think, Pooja ji, one word that you used, which is most important for Sangathan, is unity. That is what Amity is all about. That is what Sangathan is all about. And I was so proud to see Dr. Kalpana, very congratulations that within a very short time of time in the morning, and I'm sure the ASCO team and Dr. Sodi's team helped you, that you were able to compile this video. I mean, what a great feeling that the flame of Sangathan was lit all across the country, all across the world at the same point of time. There is, I can tell you with conviction, no other education group in the world which can achieve to have this unity, where at the same point of time, across the world, people with the same philosophy, the same thinking, are doing the same thing of lighting the Sangathan torch. I congratulate you, Dr. Kalpana Sharma. I could see the passion, the joy in you for being able to organize this. Dr. Marshall Sani, the core team of organizing Sangathan for so many years. Of course, this was in earlier years done by Dr. Shukla, by Dr. Gurinder Singh, by so many of you who are sitting here, but both of you have been doing a tremendous job. And I look forward to the Chayaji, the cultural event, to all the institutional heads, the amount of work that you will do to motivate your students over the next few weeks that we will be having. But this year I will miss students coming from all over the country. It was used to be a celebration of multiple days with dance performances. But I think one thing as human beings that we have learned over the last 1.5 years is that as a race, as a society, how resilient we are. There is nothing, and we have to have this confidence, this happiness, that there is nothing in this world that can stop us from moving forward. I think this is what we have seen as a society, as humanity, and I have seen this within the Amity family. As Pooja ji rightly said, we are one family. And I would like to thank you on this platform of Sangathan, to every one of you who during these dreadful times came together as one family. And there are so many stories of heroisms, of sacrifices, of selfless caring of others, of Amitians, where you have helped each other, you have helped your neighbors, you have helped random strangers during these difficult times. And this is
what Amity stands for. And that is why I am so proud to be part of the Amity family. And I thank each one of you for that, and that we are able to celebrate this unity, this togetherness in this auditorium today is absolutely tremendous. And this is the marking of the beginning of a better future that we are all looking for. So thank you to each one of you for that. I was so happy to quickly say hello to all our sports captains. What an exciting few weeks ahead for all of you. And when I spoke to you for that very brief moment, this is something that founder has always taught us. And we as the elders in Amity want you to learn also, because you are the future of Amity. You are the future of our country, of this society. Dr. Chauhan has this skill that if he meets someone for 5 seconds, he can understand their whole personality. So today, when I saw each one of you for those few seconds, let me tell you what I saw in you. I saw in you leaders of tomorrow. I saw in you dynamic young people who will achieve greatness. And let me guarantee you today from this platform that each one of you who has taken this step of leadership and that you have been chosen by your institutions to represent you will ensure that you will be the greatest leaders of not only our country, but this world. And I'm so proud of that. Because when our founder established Amity, it was with this dream to nurture young people, not only in our country, but around the world, and give them all the tools, whether it is the professional inputs, but most importantly, the behavioral science, the foundation, a strong foundation of values and sanskars to help society. Because if that is what you have in you, if you are great leaders, if you are caring for others, that is the guarantee for a better future. That is the guarantee for a better world. And our Honorable Founder President has given us this diktat for Amity, the new motto for Amity, that together, all of us will change this world. Together, all of us will make this world a better place. And today, if we dream, if today your parents, dear students, if today your faculty members dream of this world being a better place, it is because we have the confidence in you as the younger generation. We have the confidence that you have the right values. We have the confidence that you will leave no stone unturned. We have the confidence that it is your generation that will ensure that our world is a united world. Our world is a better world. Our world is a great place for future generations to come. So today, you as the sport captains of your teams are sitting here not only as the sport captains of your institutions, you are sitting here as the future leaders of our world. This is the responsibility that we want to give to all of you. That every morning when you wake up, do not think that I am just a student of a great university like Amity. Don't think that what is it that I have to achieve in the next 1 year or 6 months down the line. Wake up every day with this energy and this passion that what can I do to make our world a better place? What can I do to help other people around me? And if this unity is there, what Sangathan represents, where students not only from Noida, and not only from institutions and universities and schools across the country,
but where Amity students from all over the world will compete. And now, due to technology, they will compete online. That is the strength of unity. In this world, there is nothing stronger than the bond of unity. If a family is united, if an organization is united, if a country is united, nothing can break that family. Nothing can break that organization. No one can infiltrate that country and take it over. It is with this belief that we celebrate Sangathan every year, to celebrate this great vision of our greatest visionary, Dr. Ashok Chauhanji. Because when he established Amity, it was just not a single aim in mind. His aim was to have same-minded people all over the world, united in one mission, united in one philosophy, united in one aim. And Sangathan every year celebrates this unity amongst all of us, amongst all the 200,000 Amity students who are studying at this point of time all over the world, and the hundreds of thousands of alumni. And I'm so happy that I was told that many alumni are watching. And since the morning, I have got so many messages on Twitter, on social media, on the email from alumni who are saying that some of the greatest memories they have on campus has been of this feeling of unity and bonding during Sangathan. So to all the alumni who are online today and who will be seeing various events, you are always part of family. So to the sports captains, congratulations to you for having been selected to represent your institution, to represent your Amity. It is a very, very big honor to be the sports captain at Sangathan at Amity. So I congratulate you, but be great leaders. Great leaders are those who can extract energy out of their team that their team did not know existed in them. So be those leaders who motivates their classmates to perform more than they even thought they could perform. Be those leaders who lead from the front and who push from the back. Be those leaders who will be remembered by your classmates that this was my sports captain. It does not matter whether we won or we lost, but this was the sports captain who motivated me, who encouraged me to achieve more than I could have ever dreamt of. If as a leader you can achieve this, then you have been a great leader. And after seeing you, and I have seen hundreds of thousands of young people over the last 25 years of being part of the Amity family, let me reiterate to you that each one of you is a great leader. And I am so proud of that. With that, I thank the whole organizing committee. Once again, to all the leaders of Amity who are sitting here, who are online, from the bottom of our hearts with a lot of emotion, that every year we all come together to celebrate Sangathan in the honor of our greatest leader, Dr. Ashok Chauhanji. And once again, let this be a great celebration of Sangathan, and I wish you all the very, very best for that. Thank you. Thank you so much, sir, for enlightening us with your inspirational word, and for also for energizing the environment and making it vibrant. It was also an honor to hear Pooja Chauhan, ma'am, Chairperson, Amity Humanity Foundation. Thank you, ma'am. I would also like to thank Abhay Chauhan, sir, for his address. It has been a great opportunity to hear from you also, sir.
I would also like to thank Silvamurthy, sir. The address was thought-provoking and insightful, sir. Thank you, sir. As we come to the close of our inaugural ceremony, may I now please request our organizing secretary for Sangathan 2021, Dr. Jogeshwar Goswami, to propose the vote of thanks. Sir, I will, sir. In the closing, sir, promise, as ma'am says, I'll play for. Good afternoon, all present. A warm and hearty welcome to each and everyone gathered here for the inaugural ceremony of Sangathan 2021. I am very humbled and honored to stand before such a high-spirited, distinguished dignitaries on dais of the dais to propose the closing remarks and vote of thanks of the inaugural ceremony of 22nd Inter-Amity Institutions Sports Meet 2021 in celebration of Founders Day. It is actually tough to thank in person all those who have contributed to make Sangathan happening in such a huge and spectacular manner. Sangathan is not a calendar event. It is a spirit of Amitians to bind each and everyone with a sense of belongingness, healthy competition, innovation, and sportsman spirit. A wonderful world known as Amity is given to us by our beloved founder president, Sir Dr. Ashok K. Chauhan, and respected chairperson of Amity Schools, Dr. Amita Chauhan ma'am. It is just because of their noble idea and thought of providing the society with such a great educational platform, the world is experiencing the fruits of excellence through the contribution made by the students, faculty members, and the staff of Amity. My heartfelt gratitude to Founder Sir and Chairperson Ma'am for such a brilliant contribution to the society and for showering their unconditional blessings on us. It is our Founder Sir's vision to see all Amitians physically fit and academically sound all the time. To carry forward the word of excellence, we have our vibrant and dynamic leader, Dr. Atul Chauhan Sir, President RBF and Chancellor AAUP, whose untiring effort have made Amity a globally recognized educational power. Sincere thanks to you, sir, for motivating everyone and guiding every Amitians towards excellence in all the fields. We are blessed to have a leader like you, sir. Sincere thanks to Mrs. Pooja Chauhan ma'am for showering her blessings from Dubai, and that's the blessing of IT, and that has been given to us in Amity by our Chancellor, sir. And your presence, ma'am, always inspires all the Amitians, all the students. Thank you for your love and blessings every time. My honest gratitude to another exemplary leadership, Dr. Asim Chauhan, sir, Additional President RBEF and Chancellor AUR, for always encouraging all the Amitians towards honesty and commitment to make Amity a commendable global educational platform. We are fortunate to have leaders like him. Sincere thanks to Ajit Chauhan sir, Abhay Chauhan sir, and Amol Chauhan sir, because they themselves are the sportsmen. They have represented their institute, they have represented their school, they have represented their college, and students, for you all, they have played for Sangathan also. Games like cricket, basketball, and karate, these are the games that they are very good at, and I am very proud that I have seen them playing since last 22 years. So their presence during the event also will motivate you thoroughly, I'm telling you. My humble gratitude towards Professor Dr. Gurinder Singh sir, Group Vice Chancellor, who have made the visualization of our founder sir come true towards giving all the students a vibrant sporting extravaganza in the form of Sangathan.
Your efforts have grown 22, 23 years old now and graduating day by day, slowly to the different levels, sir. Thank you so much. Sincere thanks to all our Apex body members for helping and guiding towards a successful beginning of Sangathan 2021. I extend my profound gratitude to an indefatigable personality of Amity University in Noida. I hope you must be waiting for this name. Professor Dr. Balvinder Shukla, ma'am. Yes, he deserves, I think. Yes, he deserves. For all guidance and support and motivating from the start of planning and organizing and administering each and everything in Amity, not in sports, in academics, but in sports, we are very lucky that she herself very enthusiastic and has not only the normal sports. She has encouraged those people who are very reluctant to come to field to play and given another window like vintage games. So thank you, ma'am, for giving all this opportunity to all the students at Amity University. And I extend my heartfelt appreciation to our chairperson and co-chairperson of organizing committee, Sangathan 2021, Professor Dr. Kalpana Sharma, ma'am, and Professor Dr. Marshall Sahani, sir. Yes, I think they also deserve. For guiding everyone for successful beginning of Sangathan 2021, your guidance and support will be cherished throughout the event, ma'am and sir. Heartfelt thanks and appreciation to AIS Noida team. Always all the schools participate, and specifically AIS Noida, we've been using the campus. It started from that campus only, and the whole team is so nice in extending all the help for conducting the Mashal relay, for conducting all the sports. And thank you to that team, all the team from that campus. I extend my heartiest thanks to the organizing committee members, the chief coordinators and members of all the subcommittees for their diligent effort towards a wonderful and smooth beginning of Sangathan 2021. Sangathan will not be possible without our energetic and enthusiastic participants. I extend my sincere thanks to all the participants, student captains and vice captains, and all the participants for making this event vibrant always and keep the spirit of Sangathan high in the same way. Last but not the least, I would like to thank and appreciate all the people who are working behind the screen always in making the event successful right from the beginning to end. Just to name few of them, the groundsmen, the drivers, the electrician, the IT personnel, the media personnel, and even the medical support staff and the Malis also to make this campus wonderful and beautiful every time. We should thank them every time. And I just wanted to touch and thank this sentiment of everyone who works selflessly in making the inaugural of the Founders Day celebration a grand success. And please excuse me if I have left anybody in naming so. And in the morning itself, I was just talking to Guren sir that I was missing one person. That's Grover sir. He's no more with us, but his spirit will always be with us. I myself has learned many things from him. I've been associated with him. His spirit is very high. And he used to conduct all the events, specifically the competitions, the Mashal relay, everything so nicely. I personally miss him. With the blessings of Almighty and all my seniors, I rest my vote of thanks here. Thank you, one and all. Thank you, sir. Thank you, Dr. Goswami. It is in the way life is, people will always go, but their legacy will always continue. Yes, so we will always remember Mr. Grover for the work that he did for Sangathan. I'm so happy that you remembered him today. But may I just, Dr. Shukla, if you allow, take help of, first of all, let me say the flexibility
that Amity has, no other university will have. You had announced 5th of October as the inaugural for Sangathan. I had given you the time. I'm so thankful you changed it. What happened is that, as you know, the Dubai Expo got inaugurated some days ago. So the organizing team from Dubai had asked that to represent our country and to represent Amity, I be present at the inauguration of the India Pavilion. So I had to fly there, and I requested Dr. Shukla that I do not want to miss the inauguration. So a lot of people were asking, why did we shift? So the reason why we shifted was that I wanted to be present. And also on the second day, under the leadership of Pooja ji and the FICCI organization, of which he is also a very senior leader, there was a grand fashion show which was organized at the India Pavilion. And I am so proud to say that in addition to 2 of the top fashion designers presenting, our School of Fashion Design of Dubai campus presented, and everyone said that the designs and the modeling by our students were far superior than the professional designers itself. That is the quality of Amity. But what I was asking permission was that I wanted to take the help of your students, Dr. Shukla, that students, you know, in the last 1.5 years, the amount of effort, and sometimes it's difficult for people on the other side to realize how difficult it was to take education online within a short period of time. And everyone who is sitting here today, all the leaders of Amity, all the faculty members, the IT teams, the staff members, put in so much effort to ensure that you as students get the best possible opportunity. Online education is not the best way of doing, but it is much better than not getting any education, which millions of young people across the world did not get. So could I take your help, dear students, that may I request all our senior leaders, if you could kindly just rise and just face our students, and students give a huge round of applause to thank from our side. A louder applause, students, to thank your Amity and your leadership on our behalf. No, it is. To each one of you here and online, truly, personally, as a foundation, as an organization, we are indebted and grateful to each one of you. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. I would like to thank honorable and distinguished guests for honoring us with their presence and guiding us with your enlightening words. Thank you also to the dignitaries and students who have joined this ceremony through online mode. Before drawing the curtains to the inaugural event, I would not end up but begin the program with a quote. Alone, we can do so little. Together, we can do so much. And so with this, we can mark the beginning of Sangathan. Thank you everyone once again. ये वाला ना refresh. Yes. Now I request everyone to collect the refreshment boxes before you leave from outside. And after that, please proceed to sports ground for exhibition match of various games. We'll be having a match of football in sports ground. All of you, please move to the sports ground.
भाई ऑन कर लो सब उस पे All of you, please proceed to sports ground for exhibition match of various games. There will be inaugural match of footballs in sport ground. After taking your refreshment, please move to the sports ground. अबे हटाओ इन्हें हेलो चेक वन हेलो हेलो बोलते रहे सुरेश Hello. Check one. Hello. Hello. Check one. Hello. 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 Check one. Check. कम कर सकते हैं एक काम करो एक बॉल कार्ड पीछे भेजो हाँ ठीक है
Good evening, ladies and gentlemen. Once again, a very warm welcome to each one of you, and welcome to all the sportsperson. Chancellor, sir, wishing you and extending a very warm welcome to you and to all the sportsperson who are present here today. It is indeed a wonderful feeling to be doing this in an offline mode after a gap of 2 years. All the players are all geared up for the football match, which marks the official beginning of Sangathan 2021. So as we can see, our Chancellor, sir, has already motivated all our speakers, and here they go. We are about to witness the first kick of the football match, which marks the beginning of Sangathan 2021, and here it goes. Wishing all the players a very best, all the best. Keep your spirits high and keep the sportsmanship spirit high and the Sangathan spirit high. Thank you very much.
कंटिन्यू करा ते